आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ गेम ऑन है। ऑफ कोर्स गेम ऑन करने के लिए वैसे तो डॉक्टर साहब होते हैं, लेकिन मैं उनकी जगह पे गेम को ऑन करने की कोशिश करूंगा। विद मी इन द स्टूडियो ऑफ कोर्स आर एक्सपर्ट्स, रियल प्लेजर टू बी विद दीज गाइज एंड शेयरिंग द स्टूडियो विद देम। मोहसिन खान साहब, लैंस फ्लूजर, राशिद लतीफ एंड ऑफ कोर्स शोएब अख्तर। जाने से पहले दोस्तों हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से, ओवरऑल एक ओवरव्यू ले रहे थे हम टूर्नामेंट के बारे में, और अब जरा गुफ्तगू को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं और शुरुआत करते हैं। शोएब, मैं आपसे शुरू करूंगा जी। कप्तानों के बारे में बात करते हैं। कैप्टन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली, बट हर कैप्टन का अलग तरीका कार होता है कप्तानी करने का, उसका एक अलग रवैया होता है, अलग शख्सियत होती है, सारी होते हैं। जो कप्तान आप देख रहे हैं सारी टीमों के अंदर, फॉर यू हु इज द बेस्ट कैप्टन विद अ वीक टीम, or a weak team with the best captain, or just a great captain and just a okay captain? Okay captain. You're talking about the captain or the leaders? Oh, well played. So okay, we have the leaders here. Let's. इसके पास टीम भी है, इसका अम्युनिशन पूरा है, बैट्समैन पूरे हैं, स्पिनर्स पूरे हैं, विल पूरी है, नेशन इकट्ठी है पीछे, और 20 साल से स्ट्राइव कर रहे हैं। मशरफी, बांग्लादेशी, I think is one of the finest find that Mashrafi, he came on top as a leader. He gelled his team and a board together, which was the toughest thing to do in our structure, as you know. Yeah. So, okay, having said that, I think Ian Morgan. आप कुछ ज़्यादा ही honest नहीं चल रहे, ज़्यादा ही straight forward नहीं चल रहे आप। ठीक है चलते हैं। That's what it says. मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं मसला ये। And I think since Ian Morgan has come, I think they have managed to build a team where he can tell or say, for the first time in England history, that this is a team here to win the one-day World Cup for the first time, and this is the best chance of England winning the World Cup. But my doubts are with England because of their bowling. I know you consistently talk, और उसके बारे में हमने बात करनी है आज जब हम आएंगे उसके ऊपर। अच्छा, I think Ian Morgan वो बंदा है जिसने, it's a different mindset. He's an Irish guy. He's not Englishman. I'm sorry to say this, but he's an Irish guy. And the other foreigners that were actually built the whole scenario for the England actually are foreigners, mostly touching to the South Africans. And the flowers, right? Yeah. And at the same time, I think this is their claim to fame, to win this World Cup comprehensively, but get off on a good start. और यहाँ पे England to get off to a good start ये नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा believe करता हूँ for England, you know, I was thinking in the car, I was just thinking, for England, their mindset is like, it's okay to lose. No, it's not okay to lose no more. With this batting lineup, with this bowling attack, with this scenario, with this homemade pitches, no, it's not okay to lose. And this is what he doesn't want, Ian Morgan. I think Ian Morgan stands out. I think Mashrafi stands out. If Sarfaraz gets his grip back on the team, I think he needs to start talking. हमने गलत कह दिया, चुप कर जा भाई। हमने गलत किया, सॉरी यार सरफराज, आई एम सॉरी वी सेड दैट, बट तू ज्यादा बोलना शुरू कर। अगर ज्यादा बोलना शुरू करेगा तो यही एक कराची वाले की ताकत है, वो जब बोलना शुरू करता है। खामोश बैठा हूँ देर से। हाँ, यही कह रहा था, साथ ही में कराची वाला बैठा हूँ खामोश, 50 दिन ठहर रहे हो। ठीक है जी, ठीक है। आई थिंक Faf is there. Yeah. Faf needs to prove his captaincy. You see, that most of the time that we've seen Faf, then collapsing, right? Along with the team, I think it's one of the finest team. It is there to win all the round matches, South Africa. But when it comes to the big stage, does South Africa produce the good? Yes, this time they will. But the question needs to be asked. I think another captain that I look for, I think that he can do wonders. I think it's Kane Williamson. New Zealand, Kane Williamson. राशिद, आपके लिए कप्तान सारे जो हैं, फाफ डिप्लोमेसी, मेरे ख्याल से जो कल्चर है वहाँ पे, कोटा सिस्टम के बाद आप देखें कितने सारे प्लेयर कॉल पैक में चले गए, उसके बाद उस टीम को लेके चलना। एक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच में रबादा ने 5 आउट किए थे, तो उसको एक माथा चूमते हुए दिखाया। वो एक क्लासिकल पिक्चर थी साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड डेज की। तो उस जमाने के देखते हुए फाफ डिप्लोमेसी जिस तरह टीम को लेके चला गया, हालांकि AB डिविलियर्स छोड़ चुका है इस वक्त टीम को, लेकिन जिस तरह से वो टीम को लेके गया, नंबर 1 कैप्टन मेरी नज़र में वो है। वरना MS धोनी, जो कि इंडिया ने समझा था शायद ये 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, लेकिन उसने प्रूव किया
CSK की तरफ से भी लास्ट चैंपियन हुए, अभी फाइनल खेले, फिर रोहित शर्मा भी उनके पास है, विराट कोहली भी, 3 कैप्टन एक टीम के अंदर मौजूद है जो कि जिनकी हिस्ट्री ज़बरदस्त है। तो ये 2 टीम, इयन मॉर्गन आयरिश, वो अच्छा कैप्टन है और लेकिन उनका स्टाइल, वे ऑफ स्टाइल डिफरेंट, वो हार भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। तो ये 3 एक नज़र आए मुझे, मेरी नज़र में। Okay, so there your captains right there. For you, Zulu man, who are your captains, or what do you see when you look at these captains, these leaders? Yeah, my old enemy in the corner there has called their names already. You know, we've got. Enemy in For the me, they're decent captains. Okay. They're not Steve Wars and, Yeah. in my case, Hansi Cronjes. When you say decent, what do you mean? They don't sledge too much, they wear nice clothes. Sledging is they- another story. I don't think you're allowed to. That fellow over there, he was the master, but that's a story for 5 other So you can days. tell me off air, you can tell me what he used to say. Yes, but that stories are not fit for human consumption. Oh, that's exciting. Anyway, Interesting. I see decent captains. I really do, and there's a number of decent I agree captains. with you. I agree. The best captain, I don't see his name as captain. MS Dhoni for me would be somebody who would be the standout here. I see decent captains. Another guy I've had experience with, Askar Afghan. Past captain for Afghanistan, not captain in this World Cup. I had the privilege of coaching Zimbabwe a little bit, and we played a lot against Afghanistan. That team was totally different when he was on the field to when he wasn't. And that is something that for me stands out as a good captain. I don't think he even averages 20 in ODI cricket, but the others play better because of him. Yeah. So we've got these stats. Let's take a look at these stats of these captains that you were talking about, Lance. Just bring those stats up for our viewers as well. So we have. Right, there you go. There we have the captain's stats right there. That's Duplessis. 134 matches now. That's Yeah, good. Stats are one thing. Yeah. And all these captains have got decent stats. Yeah. It's can they make better stats for their players by being on the field? Right. That is the question. That is the question. That is the question. Beautifully put. That I is the interpret when we talk about captains. And when you talk about MS Dhoni, you know, I tell you, yeah, he's not the captain, but I tell you something, having Dhoni behind the stumps, Yeah, yeah. For me, keeping he an pushes eye the on the buttons game. The other day in the warm-up match, I don't know, आपने देखा था नहीं देखा था, बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया का warm-up match था, during the Bangladesh warm-up match, India, Dhoni was helping set the Bangladesh fielder in the right place. He said, "Are you sure you want to be here?" Because he was standing in the wrong place. They made him bring I him in think front he of was just strong in that area, and it was quite a dangerous position Yes, for that fielder. yes, I think he was pointing him out कि भाई इधर से निकल जा तो वो करते हुए. But Dhoni would be there. I think he'll be like the ghost captain, keeping an eye on the affairs. Mohsen bhai, for you, who are the captains, leaders for you in this tournament? Well, you see what Lance said about they're decent captains. What he actually meant, they're good captains. Nobody is brilliant. I don't see a brilliant captain here. Team winning a match for the captain is not a good. It's not a brilliant captain. The captain winning a match for the team is brilliance. Sometimes you see the tactics of a captain. You feel that suddenly the game is going out of your hands, and suddenly the captain making some tremendous changes, either whether you're bowling or whether you're batting. You know, and like I feel. In this lot, honestly, I see good captains, but nobody is brilliant, absolutely. If Dhoni would have been captaining India, I would have straight away said, yes, Dhoni the best captain, right? Yeah. But like if I say, we were discussing in the break and we were agreeing on that, captains like Steve Waugh, Hansi Cronje, right? They used to lift the team up. And like Afghanistan, Lance gave an example. If you see that man, Afghanistan is the baby in this competition, but he literally is fighting from one ball till the last ball, the first ball till the last ball. That is captaincy, to lift the team up. And I personally feel that a good captain or a good coach, it doesn't matter. It does not mean that he's got to be a great player. He's got to be a good leader. He should lift the team up, right? For example, I'm not, because he's my countryman. Imran was one of the greatest captain of Pakistan. Before Imran, Mushtaq Muhammad was the greatest one of the greatest captain we had. They used to lift the team up,
And many a times when the team went down, because I played with Imran, and he used to lift the team up so beautifully that suddenly we used to feel that we are the winners. That is good captaincy. And Fakhar, otherwise, I'm not putting anybody down. They are good captains. That Faf is okay, Ian Morgan is okay. But I would like to see a captain when the chips are down and the captain is lifting the team up. That is a sign of a good captain. और जो मुसीबत में जब टीम पड़ी हो और उस वक्त एक कैप्टन टीम को उठाए, चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में, और वो होता है कैप्टन. और मेरा ख्याल वो उसके अंदर इवन लांस इज सिटिंग हियर इन साउथ अफ्रीका, कितने कैप्टन आपके वो होंगे ना. A.B. de Villiers, I would say that he is the man who used to prove himself going out there as a captain, that I am doing it for the team also. Now that is a sign of a good captain, to prove it yourself. And even if you are not a great player, but when you can lift the team up, that is the sign of a brilliant captain, not just a good captain. Absolutely. राशिद भाई, आप कुछ आजकल के रूल्स ऐसे बन गए कि आईसीसी खुद कैप्टनसी कर रही है. 10 ओवर में फील्डर कहाँ पे खड़े होंगे, 11 से 40 ओवर तक कहाँ खड़े होंगे, और 41 से 50 ओवर तक कहाँ खड़े होंगे. फिर हमारे पास कंप्यूटर की टीम आ गई है, वीडियो एनालिस्ट हैं, मेंटोर हैं, वो टीम को रन कर रहे हैं, हेड कोच चल रहा है. इस पूरे टीम के अंदर MS धोनी ऐसा नजर आता है वो खुद कंप्यूटर है. जैसे जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लिए हुआ करते थे, क्योंकि जावेद मियांदाद और MS धोनी का माइंड बिल्कुल मिलता है, वो लेके चलते थे. इमरान भाई के ज़माने में भी, मोहसिन भाई के ज़माने में भी ब्रेन जो चलता था वो जावेद मियांदाद का चलता था, जितना हमें मालूम चला है और हम जितना उनके साथ खेले हैं. MSD का ये भी है कि वो कंप्यूटर खुद है, उसको ज़रूरत नहीं है कि हेल्पर की, वो बताएगा. वो जब आप स्टेप ग्राउंड के अंदर जाते हैं वहाँ से कंप्यूटर ऑन हो जाता है. मुझसे पूछ लो, मैं बताया तो ना, मैं उस फेज में खेला हुआ हूँ जावेद मियांदाद का. बिल्कुल सही कहा राशिद ने, जावेद मियांदाद वाज अ ग्रेट लाइक धोनी. लेकिन इमरान की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त एक और क्या थी. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स ऑफ हिज टीम. He used to take during the tea break or the lunch break, if you are fielding, उनसे इनपुट लेता था. इनपुट लेके, और एक जो कमाल की चीज़ होती है फ़खर, उसको इम्प्लीमेंट करना. प्लान तो बन जाता है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट इज़ वाई जो भी कैप्टन इम्प्लीमेंट कर लेता है अपना प्लान, लाइक इमरान यूज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम जावेद and the other players and used to implement that so nicely. The team used to finish up. So the right kind of think tank was very important, you know, the right kind of think tank very important. to make that important. लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी की इतनी इंटरवेंशन हो गई है, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सब चीजें जो है फैसला कर रही होती हैं कि खेल को किस तरीके से लिमिटेड कर दिया है. कोचेस ने, कंप्यूटर एनालिस्ट ने लिमिटेड कर दिया कप्तान की सोच को. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने माइंड ग्राउंड में जाने के बाद यूज़ करते हैं. मुझे कौन से बॉलर खिलाने हैं, अगर फाफ डुप्लेसी है उसको पता है, एंगिडी उसके पास है, डेल स्टेन उसके पास, रिबाडा है, शम्सी को खिलाना है, या फिर बॉलिंग चेंजेस किस तरह से करनी है. तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. बिल्कुल. और धोनी की another good thing about Dhoni is that this guy consistently challenges conventional wisdom of cricket. He would think outside the box, never be afraid to think outside the box and do things जो normally बंदा कहता है कि ये होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए. और फखर कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, that really counts. If his body language is down, the whole team goes down. If he keeps his body language up, you know, with the strategy and planning, the team lifts up. So that really helps. Well, that does. I think it's a very important factor. तो कप्तानों की तो बात हो गई, कोचेस की बात कर लेते हैं. Let's talk about some coaches as well, because we spoke about captains. और राशिद भाई आपने भी कहा कि कोचेस का, हेड कोच की भी इंटरवेंशन हुई होती है बीच में. ये कितनी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए? कोई डेफिनेशन होती है सेपरेशन ऑफ पावर? डिपेंड करता है कि कोच कैसा है. जैसे मैं, अब ये पर्सनल लाइकिंग है, मैं जैसे फिल सिमंस को लाइक करता हूँ. वो आयरलैंड की टीम को कहाँ से कहाँ ले गया, फिर अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान को एक पुश और दी है. तो अपनी अपनी लाइकिंग होती है कौन सा कोच अच्छा है. किसी को हमारा कोच अच्छा पसंद है, किसी को किसी और का पसंद है. लेकिन मेरी अगर ज़ाती तौर पर पूछेंगे तो मुझे फिल सिमंस की एटीट्यूड, उसकी अप्रोच, उसका बिहेवियर टूवर्ड्स द प्लेयर, वो आइसोलेट नहीं करता किसी को भी, और टीम के बारे में करता है. किसी पर्सनल गोल नहीं है उसके, टीम के गोल्स होते हैं, उसको लेके आगे चल रहा है एक नेशन के. वो फिल सिमंस है, वो फिल सिमंस के अंदर है. अच्छा शोएब, अब से कुछ 2 दिन पहले एक अखबार के अंदर, बहुत बड़े क्रेडिबल अंग्रेजी के अखबार के अंदर खबर छप गई कि जनाब
इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और मिकी आर्थर का जो है वो खत्म हो रहा है, तबादला हो जाएगा। तबादला हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रही है, पोस्टिंग खबर ठीक है लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ ये कि पिछले ये महीने की खबर, खबर थी। पहली बात तो ये खबर कैसे निकली होगी या क्यों निकाली गई होगी? निकाली ये गई बात- होगी, ये बात- ये ये बात- निकाली ये गई सवाल। होगी। मतलब This is the question. ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सी बात हो, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जब आपकी टीम But this is a मैदान में controversial उतरने बात। वाली है वर्ल्ड कप के, डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बी डूइंग दिस? डू यू थिंक अखबार की तरफ से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार एक कौमी टीम आपकी वर्ल्ड कप में उतरने वाली है, आप इस वक्त ये खबर अखबार का नहीं है, ये तो न्यूज एजेंसी है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की तरफ से आई है, खबर आई है और वो हर अखबार वाला छापेगा वो तो। आप लोग बस यही कहना चाहते हैं इसके? नहीं, मैं ये कहता हूँ, देखो राशिद भाई वेरी वेल प्लेड। राशिद भाई ने बल्ला यूं किया और फिर यूं करके देखो, उठा मुझे- लिया, अरे वो गई गेंद। ठीक है, मुझे एक तो चीज, मुझे अगर एक चीज पता है कि किसने खबर दी है, किसको दी है, कहाँ से आई है, बताए ना, हमें नहीं बताए, बता ब्रेकिंग न्यूज सकते, चलाते हैं, भाई पीटीवी आ न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज करते हैं अभी। बता देना राशिद भाई, अभी पीटीवी न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं हम। नहीं, वो ये वर्ल्ड कप है ना, बाद में बता, ब्रेक में बता देंगे, मैं दे बता दूंगा, दूंगा ठीक ब्रेक है, में। अच्छा, जी सॉरी शोएब आप कह रहे थे। बहरहाल ये डिसहार्टनिंग है, ये ऐसा कहना नहीं चाहिए था और होना नहीं चाहिए था, करवाना नहीं चाहिए था। और जिन्होंने करवाया राशिद भाई को एग्जैक्ट पता है कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। लेकिन हमारे पास सेफेस्ट बेट क्या है इस वक्त यार, एज ए नेशन हमारे पास सेफेस्ट बेट, और हमें क्या करना है एज एंकर्स, एज ए होस्ट, एज ए एक्सपर्ट, हमें अपनी टीम को बैक करना है। दैट इज गोज विदाउट सेइंग, यू नो। I know chips are down in terms of, you know, हम वार्म अप मैचेस अच्छा नहीं खेले, we lost a warm up game actually comprehensively. ट्रू Actually, against अफगानिस्तान उन्होंने क्लिनिकल फिनिश किया बिल्कुल। 4-5 विकेटों पे। बिल्कुल। So this was bit embarrassing for Pakistan to lose like this. Okay, we take that. So इसके बाद अभी you know हमारी जॉब, हमारा करियर, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे खेलने से लेके पीटीवी के दौर तक हमेशा एज पे रही है कि इसके बाद पता नहीं लिविंग क्या ऑन द होगा। एज, शोएब अख्तर, You understand? लिविंग ऑन द एज। समझे? अगर मेरी बात समझ रहे हैं ना, अगर आप वैसे ही जेम्स बॉन्ड टाइप के आदमी हैं यार, एडवेंचरस किस्म के आदमी हैं हमेशा से आप। यार मैं सीधा साधा आदमी हूं, तुम लोगों ने ओखा बना के पेश किया। But this is what it is in this country. You know it. I know it. As well as anybody else does, right? I know, So I know. अच्छा, अब ये कि पाकिस्तान यहाँ से कैसे निकले, पाकिस्तान को यहाँ से निकलना है, पाकिस्तान को यहाँ से परफॉर्म करना है, पाकिस्तान का मोमेंटम गेन करना है, पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि उन 4 मैचेस में खुदा खासा ऊपर नीचे भी हो भी जाए तो हमारे पास 6 मैचेस ऐसे पड़े हैं जिसमें कम बैक कर सकता है। उसमें सरफराजी बच जाएगा, इंजीफ बच जाएगा और विक्की भी, मेरा भाई विक्की बच जाएगा। ताना भाई विक्की भी बच जाएगा। Lance, what are the hopes of the people of South Africa with their team? South Africa have really, you know, sometimes have been all the way very close and yet so far away. You know, so what are the hopes of the South African fans right now? Look, I think they're fairly decent. I mean, it's a fair team, and let's be honest, all these are once-off games, and it's just about getting into the top 4. They would love South Africa to win this tournament and get rid of a couple of choker tags and this tag and we can't do it, and to silence a lot of people. But we've won the Rugby World Cup, which is a huge thing for us as Yes. a nation. We've been around for a long time. We lived in apartheid for a long time as well, so we're only back in international cricket 20 years or whatever it is. So we've been very close, and the frustrations, I guess, of the people really is, you know, let's just get there and we'll all be happy. And that for me is the expectation, is that it's more of, let's just get this thing done. Yeah. Let's just win this thing, put it to bed and move on. But Lance, Well- can I ask you something? Can you just not take that baggage into the matches? You know, with Jet we are chokers. We could not do it. We could just not win it. Can you just not take that baggage on the field? Because the last time what I've seen on the 2014, you know, the AB de Villiers just fell apart. Literally fell apart in semi-finals. I think- and the whole team, just because we couldn't make it. Yeah. I agree to disagree along with you. You're the fantastic team that we played against, with the fantastic plays and the one of the best captain that I had known, apart from Imran Khan, was Hansi Crony. Actually, who's the one actually introduced me to my teammates. Was this is the guy, and Gary Kersten. The Gary and the Hansi was the guy back in 90. You guys were touring in Pakistan back in 93, 94, something like that. So I was there a net polo, by the way. Oh, for the South Africans. Yeah, Nice. yeah, for the South Africans. So I bought a couple of balls to Gary Kristen. He says, "Why are you the net bowler? Why are you not playing against us?" I said, "Listen, they're not picking me." So I said, one day they will pick you,
you're going to make sure that you're going to hurt me. This is the word of Gary Kirsten. Wow. And you're going to give me a tough time. That's history. That's Yeah. cricket history we're finding out right now. So- we didn't know that. That's great history. Yeah. So the finally once I played against South Africa, the Gary says, "Do you remember me?" I said vaguely because I hardly knew. You were trying to be a hard man. You did Yeah. remember him, but you said vaguely. Yeah, they have. So what I'm saying is, I lost the point here now. I know, So I what know. I'm just saying, We'll come back to the point. no, We- I want we- to say the you point. want to finish it? Finish. Because I've got to go to the break. You know? No. We'll make money in 50 days. Chalo. I think South Africa are winning all the round matches, but when they come to the point of winning, please don't take that baggage. Yeah, don't take Yeah, that fair down enough, there. fair enough. I hope they I And hope it's hopefully, okay. hopefully they get that It's okay to opportunity as lose a a game. nation. Yeah. I Yeah, hope of so. course. I hope so. I mean, Okay, for you it's guys okay can to have lose that again. conversation in the break. I got to take a break. Dosto, this is going to be a very interesting 50 days. I don't Yeah. know how this is going to really go down. 49 days to be precise, but it is going to be very, very promising. लेकिन एक चीज exciting. और है यहाँ पे। या, एक मिनट, कुछ नहीं होगा यहाँ पे और कुछ नहीं होगा और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि गेम ऑन है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की कवरेज हमारी जारी रहेगी पीटीवी स्पोर्ट्स पे और सिर्फ यहाँ पर बातें नहीं होंगी बल्कि आप लोगों को हमारे साथ रियल